Hello, 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 hello. I hope you guys are able to see me, and let's start with it. Is everything all right? Tell me. मैं अगर quickly एक बार check कर लेता हूँ if I'm live or not. I should be live at this point. Yes, we are finally live. Yes, we are finally live. Just a second, guys. Okay, cool. चलो ठीक है, शुरू करते हैं. Hello guys, welcome back to another stream. My name is Pradeep, and today we'll be लाइव स्ट्रीमिंग एंड बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आज. क्या क्या हम गोल्ड में कर सकते हैं, बीटीसी में किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं. हे रितिका, हे हेलो. तो यूल बी एबल टू सी ऑल ऑफ इट आज. एंड मैं एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ अपने कम्युनिटी में, ताकि जो जो लोग आए वो एक बार देख पाएँ. जस्ट अ सेकेंड. स्क्रीन दिख रही है तुमको? ठीक है. बहुत सारे, जैसे मैं देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग लाइव स्ट्रीम इससे पहले, एंड आई वॉज सीइंग कि किस तरीके से लोग आज एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को. एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर रॉन्ग, बिकॉज आज का जो मार्केट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए बिकॉज गैप अप में ओपन हुआ है. तुम अगर देख पा रहे होगे इस लेवल से गोल्ड अच्छा खासा गैप अप में यहाँ पर तुमको आज ओपनिंग दिखा है. एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा गैप है जो हमें चाहिए कि मार्केट कहीं ना कहीं फिल करे, बट लाइक नॉट टुडे. एक्सपेक्ट मत करना कि आज ही वो चीज़ फिल हो जाए. ऑल्सो आई थिंक टुडे इज़ अ बैंक हॉलीडे, तो उस चीज़ को भी हमें थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए सारी ट्रेडिंग में एक्टिविटीज़ देखनी होगी. ओके. एंड येस, आई होप पीपल आर एबल टू ज्वाइन नाउ. एंड बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन भी गया होगा अभी तक. आई थिंक ये नोटिफिकेशन चला जाना चाहिए अभी तक. ठीक है. वेरी सिंपल. अब तुमको एक बार मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ. राइट, दिस इज़ द ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट. इट इज़ लाइक अ गैप अप. गोल्ड यहाँ पर तुमको दिखा होगा, यहाँ से एक गोल्ड का ओपनिंग हुआ था. एंड नाउ इट हैज़ वेंट टू 4690 इज़ द करंट पोजिशन ऑफ गोल्ड. ठीक है, दैट इज़ ऑल टाइम हाई, नॉट द करंट पोजिशन, बट तुमको अभी ये चीज़ देखने को मिलेगा. ठीक है. अभी फ़िलहाल तुमको गोल्ड में क्या दिख रहा है? You'll be able to see a lot of consolidation on 1 hour time frame, but 1 hour time frame we cannot judge anything. ठीक है. एंड यहाँ पर एक छोटा सा लिक्विडिटी स्वीप तुमको डेफिनेटली दिख रहा होगा. एंड देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दिस विल कंटिन्यू टिल दिस लेवल. ठीक है. तो उसको भी हमें ध्यान में रखें. विल बी एबल टू ट्रेड, और मे भी देखते हैं कि किस तरीके के ट्रेड हमें आज देखने को मिलते हैं. एंड विल गो अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. 2 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे ध्यान रखना. ठीक है. 1 2 सपोर्ट्स. राइट, गुड रेजिस्टेंस यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है. सेकंड चीज़ तुमको एक देखने को मिल रही है, एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन यहाँ पर तुमको नीचे फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा. राइट, मार्केट इज मूविंग इन दिस एरिया. राइट, दिस इज़ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर मार्केट राइट नाउ. एंड अगर तुम देखोगे, अगर तुम वॉल्यूम प्रोफाइल ओपन करके देखोगे, अगर इफ यू गाइज डू हैव सब्सक्रिप्शन, दिस इज समथिंग यू विल बी एबल टू सी राइट नाउ. हाई probability of this. ठीक है. ये चीज़ ध्यान में रखना. एंड इस तरीके का तुमको अगर वॉल्यूम प्रोफाइल दिख रहा होगा एट दिस पॉइंट. हेलो सर. अच्छा सर, सिद्धांत शुक्ला, वेलकम बैक ब्रदर. ठीक है. तो अभी आई थिंक यहाँ से कुछ लोगों ने बाय किया था ये वाले लेवल से, जो कि डज़ नॉट मेक एनी सेंस इस लेवल से अगर तुम बाय कर रहे हो तो. ठीक है. जस्ट अभी 8:30 हुआ है. आज आई थिंक बैंक हॉलीडे है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. फिर भी हम कुछ अच्छे मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन गोल्ड राइट नाउ.
ठीक है. In next 15 minutes, you'll be able to understand that what we are looking for, the overall overview of this market and how we can take some trades. I'll try to take one or two आज and let's see how it is. ठीक है, not bad. ओके, दो चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है, दो चीज़ें. व्हेन इट कम्स टू गोल्ड और व्हेन इट कम्स टू एनी मार्केट, you'll always able to see like two types of liquidity, okay? Internal liquidity, external liquidity. You'll be able to see there is like a this area, right? Definitely there is a liquidity above this area. I'm not saying exactly about that area, right? But there could be a high possibility that market will go to this area right now, right? What happened यहाँ से तुम अगर notice करोगे, this यहाँ पे जो सपोर्ट पे आया, ये शुड हैव गॉन टू दिस लेवल, बट नहीं, ये वाला यहाँ पर सपोर्ट लिया. एंड तुम देख रहे होगे इस लेवल पे बहुत बारी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, राइट? दिस लेवल, यू सी दिस विक्स. अगर तुमको कहीं भी बहुत ज़्यादा विक्स अगर ऊपर के साइड में दिख रहे होगे, यू नो व्हाट इट इज़, यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस विक्स, ठीक है? तो इसको भी हम कंसिडरेशन में रखेंगे एज ऑफ नाउ. सो ठीक है. Do we have some key levels? Okay, cool. Okay, nice. Good area, 5 minute time frame. I think 5 minutes is more sorted. When it comes to this, 5 minutes is more sorted. Okay, it is a high probability that right now gold is moving, and you might able to see this, right? थोड़ा वेट करना पड़ेगा. Let me see. This was a 5 minute effigy. क्या आवाज़ आ रही है अच्छे से? ठीक है, आ रही है. नो स्ट्रेस. Hello. Is everything fine? Okay, cool.
ओके ठीक है, छोड़ दो, शुरू करता। सो मैंने क्या बोला था यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ से अगर एक कैंडल रिजेक्ट करती है, राइट, सो इट डज मीन समथिंग। सो व्हाट वी हैव टू लुक फॉर राइट नाउ, दैट एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन जिससे हमें और ज़्यादा ये मिल जाए कि हम अभी इसको किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट यू विल बी एबल टू सी ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तुमको आई थिंक ये दिख रहा होगा अभी, ठीक है। I will to see this, right? There is a high possibility that gold might come to this level and might take out some liquidity at this area, and then we can expect some sort of this उसके बाद, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, some sort of this, cool, very simple, not very complicated as you can see here. डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ है, उसके बाद बॉडी डायरेक्टली ऊपर क्लोज हुआ है, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन दिस, ठीक है। क्या तुमको इस चीज़ दिख रही है किस तरीके से कैंडल मूव कर रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। इट डिड केम डाउन, ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल अ लिक्विडिटी स्वीप, इट डिड केम डाउन, बट लाइक ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑल्सो इट डायरेक्टली वेंट अप, you see this, it is too much volatility right now, okay, gold is moving crazy, it's moving crazy, it is moving crazy. So yes, we cannot say anything right now, ठीक है, थोड़ा होल्ड करो, थोड़ा वेट करोगे, you'll be able to see some good moves and then we can plan something. Right now it's too much volatility. Also there is a strong resistance at this area जो कि इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो इफ़ यू सी राइट, अगर तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे तुमको देखने को मिलेगा दैट मार्केट इज testing this level, okay, this is the one touch, that is the second touch, that is the fourth touch, okay, that is the third touch। अगर तुम नोटिस करोगे इस वाले एरिया पे it has came down, right, I think it was mostly like they were trying to like invite the sellers, but it did not happen, it might have happened, right, but उसके बाद अगर तुम बाउंस देखोगे ऊपर के साइड पे you will be able to see this कि मार्केट अगर क्लोज हुआ है तो इस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ है, so that does mean something, you're getting my point, it's not going out there, what is the issue, ठीक है। and definitely on 5 minute also, if this is the condition right now, there is a high possibility that gold will directly touch this area, okay, and right now as we know that like it might go to that level, but we are not sure about what's gonna happen later, so what will happen, we need to wait ताकि मार्केट एटलीस्ट उस लेवल पे चला जाए, उसके बाद हम कुछ प्लान कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो अभी तो कुछ ज़्यादा होप्स मत रखो, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट लास्ट वाला जो हाई था ये वाला यहाँ से रिजेक्ट किया था मार्केट ने, अगर इसके उसके ऊपर क्रॉस होता है तो हो सकता है देयर आर लाइक हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से तुरंत ऊपर चला जाए, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल थोड़ा वेट करो, ठीक है, थोड़ा वेट करो, यू विल बी एबल टू सी लॉट इन गोल्ड राइट नाउ, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल थी, दिस इज वन ऑफ द फ्रीकीस्ट कैंडल जो कि पूरा यहाँ तक नीचे आई, राइट, इट काइंड ऑफ इन्वाइटेड द सेलर्स एंड नाउ इट इज़ कम गोइंग अप, बट एट द सेम टाइम ये वाला जो कैंडल था ये भी उस लेवल पे गया था एंड इट हैड रिजेक्टेड फ्रॉम दिस एरिया, राइट, सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस जोन एज वेल, ठीक है। एंड यू सी लाइक 36 सेकेंड हो चुके हैं एंड ऑलरेडी इट इज़ रिजेक्टिंग
and it went up again. Too much volatility, you need to wait for any kind of confirmation अगर तुम चाहते हो तो. स्पीक हिंदी ब्रो. ओके ठीक है भाई. चलेगा. तो अभी थोड़ा वेट करो. देखो लास्ट अगर 13 सेकेंड देख रहे हो यहाँ पर 10 सेकेंड बचे. इट इज़ क्लोजिंग बिलो दिस लेवल. ठीक है, दिस लेवल इज़ वेरी क्रूशल. इट इज़ क्लोजिंग बिलो दिस लेवल. व्हाट डज इट मीन, राइट? इट इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट सो बैडली. अगर तुम देखोगे दिस इज़ अ कैंडल जो कि ऊपर गई थी, सॉरी, एंड दिस इज़ अ विक. देयर आर 2 विक्स, यू सी. एंड यहाँ पर कितना अच्छा से यहाँ पर क्लोजर मिला तुमको. ठीक है, तो यार ऐसे मार्केट में तो तुम डेफिनेटली ट्रेड प्लेस नहीं करोगे, राइट? जब तुमको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन एट दिस पॉइंट चल रहा है एंड किस तरीके का तुमको यहाँ पे ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है. अगर तुम ध्यान से देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे व्हाट यू विल बी एबल टू सी. अगर मैं इसको हटा दूँ ये वाली 5 मिनट के फेयर वाली गैप पे, राइट? दिस इज़ अ मार्केट कंडीशन राइट नाउ. ओके, what it did, it was in this zone, right? It was in this triangle. It went up, went down, ठीक है, and then went up again. यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस तुमको देखने को मिल रहा है. इट मैनिपुलेटेड एट दिस एरिया. जब यहाँ से लगा कि ओ शिट यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, बट इट वाज नॉट एक्चुअली अ ब्रेकआउट, राइट? इट केम डाउन एंड देन लाइक अगेन फिर से इस लेवल पे आया, देन वेंट अप एंड देन फिर से यहाँ से एक मैनिपुलेशन तुमको देखने को मिल रहा है, राइट? जैसे मैंने इससे पहले भी बोला था हाउ मार्केट ऑलवेज ऑपरेट, राइट? फर्स्ट एक accumulation होता है and then you'll be able to see some kind of manipulation maybe this side and then you'll be able to see some kind of distribution at this area. ठीक है, so there are high chances that ये चीज़ भी अभी यहाँ पर हो सकती है. ठीक है, हो सकती है. एंड उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिकॉज अभी कुछ भी कंफर्मेशन या कुछ भी मैं ट्रेड दे के तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. ठीक है, मैं एक बार मेरे फ्रेम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि तुमको चार्ट अच्छे से दिखे. ओके, आई होप दिस इज़ बेटर नाउ. इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ. ओके चलो. कूल. ठीक है, इवेंचुअली गोइंग अप. ठीक है, इवेंचुअली ऊपर जा रहा है. बस स्टिल ये देख रहे हो तुम, ये वाला लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है एंड हो सकता है ये वाली कैंडल ये वाला भी लेवल ब्रेक कर दे. देयर इज़ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन गोल्ड राइट नाउ. ठीक है, और अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है देन यू नो व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल फॉर द गोल्ड. ठीक है, ये तुम कैंडल्स देख रहे हो ये वाले एंड ये वाले. जब भी तुमको मार्केट में बहुत ज़्यादा विक्स दिखे, राइट, बहुत ज़्यादा विक्स दिखे, उस टाइम पर कभी भी ट्रेड नहीं करना. ओके, नेवर टेक अ ट्रेड व्हेन यू सी लॉट ऑफ विक्स इन द मार्केट एंड उस टाइम पे इट वाज क्लियरली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है. हु सेज ट्रेंड लाइन डजंट वर्क डू. कूल. ठीक है. अगर इस लेवल पे आ गया देन हाई पॉसिबिलिटी दैट ये वाला लेवल भी तुरंत कवर हो जाएगा. ठीक है, ये वाला लेवल भी तुरंत कवर हो जाएगा. गुड. You see, reject, it is not able to cross that area. गोल्ड टीपी क्या बोल रहे हो करण भाई?
क्या बोल रहे हो? टीपी का? टीपी क्या? आपने टीपी हिट कर दिया? वाह, वेरी नाइस। 4665 से बाय लिया है, 4665। इस लेवल से या इस लेवल से? ठीक है, बट यहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था? टाइम क्या था? दिस वन और दिस वन, फर्स्ट और सेकंड? ठीक है, रिजेक्शन। करण, I feel like you're kind of fucked. Still holding? ठीक है, इसलिए बोलता मैं वेट कर लिया करो ऐसे, जब भी इस तरीके से अगर एक्ट कर रहा है मार्केट, कभी मत गुस्सा करो। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से मैं देखता हूँ, एक चीज़ समझना, ठीक है? सो डेफिनेटली दिस एरिया, मैं कम्प्लीटली इसको अकोमोडेशन नहीं कहूँगा, बिकॉज इट वॉज अ कम्प्लीट डिफरेंट चैप्टर या डिफरेंट टाइप बोल सकते हो उसे, ठीक है? तो अकोमोडेशन हमेशा बॉक्स में नहीं होता, अकोमोडेशन कैन बी इन एनी फॉर्म, ठीक है? सो अगर इसे हम अकोमोडेशन बोले या इसे हम मैनिपुलेशन बोले, देन किस साइड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ओके, यू टेल मी। 1 2 3, ठीक है? इन दिस एरिया, ये जो अभी एरिया फॉर्म हो रहा है, गोल्ड ने 3 बार मैनिपुलेट किया है, 3 टाइम्स, ठीक है? 3 टाइम्स मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, बट डेफिनेटली इट्स मंडे, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम जो लोग बाय कर रहे हैं उनका भी स्टॉप लॉस जा रहा है, जो लोग सेल कर रहे हैं उनका भी स्टॉप लॉस जा रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू इन दिस केस, जब भी इस तरीके से तुमको अलग अलग तरीके से अगर गोल्ड मैनिपुलेट कर रहा है, उस टाइम पे द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ वेट। वेट करो ताकि एक अच्छा पोजीशन पे जा पाए, आफ्टर टेकिंग ऑल द स्टॉप लॉस, जो भी हो, बाय साइड सेल साइड, ठीक है? उसके लिए थोड़ा पेशेंस आई थिंक लगेगा एट दिस पॉइंट, और सारे मिलके नहीं भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब अभी थोड़ा इस लेवल पे बाय करना तो थोड़ा क्रेजी होगा, आई वुड से, लाइक, समझ रहे हो ना? अगर तुम्हारा अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है देन आई कैन अंडरस्टैंड, बट सेंसिटिव एरिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आई वुड तो नॉट बाय सेल इस वाले, जो अभी जो चल रहा है अभी फ़िलहाल इस वाले टाइम पे, तो आई वुड नॉट बाय सेल, आई वुड वेट, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, नाइस। 30 seconds for this candle. आई एम होपिंग कि ब्रेकआउट आ जाए, बिकॉज जिस तरीके से इस एरिया को टेस्ट किया है, आई फील लाइक देर आर हाई चांसेस कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए। बंद सुनतिया। कोर्स अभी तो नहीं है फिलहाल, मे बी आ जाएगा जल्दी, बट टेलीग्राम पे नहीं आएगा, डोंट वरी।
कीप दैट इन माइंड, ठीक है। क्लोज कर दिया। हाँ, अभी तो क्लोज ही करना चाहिए, अभी तो फ़िलहाल तो कुछ मत करो, ठीक है। जो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट एवरी वन, डू नॉट गो फॉर एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है। थोड़ा वेट करो, उसके बाद हो सकता है तुम्हें कुछ अच्छे खासे मोमेंटम मिले, बट अभी तो फ़िलहाल वेट करो गोल्ड में, ठीक है। हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए अभी, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है, टू लेवल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। चलो ये लेवल पे तो ऑलरेडी मार्केट खेल रहा है, नो इश्यूज़। दिस लेवल, ओके, एंड दिस लेवल, ये दोनों ही लेवल को जो मार्केट टैप इन करेगा, मैं तुमको बता रहा हूँ उसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है। बट थोड़ा वेट करो, थोड़े पेशेंस रखो, ताकि ये वाला लेवल एक बार ब्रेक हो जाए, ठीक है। बहुत ही कमज़ोर हो गया है ये वाला भी। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, देन व्हाट आर द लेवल्स दैट कैन मार्केट कैन टेक आउट वेरी सून, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। दो लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लेवल। दिस कैन बी अ TP1, दिस कैन बी अ TP2, बट ओके, नॉट राइट नाउ, ठीक है, नॉट राइट नाउ। कूल, ठीक है, आ गया ब्रेकआउट यहाँ से। अभी द ओनली थिंग इज दैट बॉडी इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, इस लेवल के नीचे, ठीक है। 3 सेकेंड्स, नाइस, लव दैट, कूल, आ गया नीचे। ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर तुम देखोगे, अभी तक ये लेवल 5, आई वुड कंसिडर स्टिल 5 मिनट का, ठीक है, बिकॉज इट कैन मैनिपुलेट ऑन 1 मिनट और लाइक इट कैन शो सम डिफरेंट व्यू ऑन 1 मिनट। अगर तुम 5 मिनट की बात करोगे, 5 मिनट पे अभी भी 1 मिनट 20 सेकेंड बचे हैं, ये वाला राइट। आई एम प्रिटी मच होपिंग कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी इसके नीचे ही क्लोज हो, ठीक है। ये जो वाला लेवल है, इस लेवल के नीचे बॉडी क्लोज हो, एंड देन वी विल बी एबल टू सी सम गुड मोमेंटम। 1 मिनट इज स्टिल ट्राइंग टू लाइक गो अप, देख रहे हो, ठीक है, ऊपर क्लोज हुई, देखो। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। 47 सेकेंड्स। हम चाहते कि ये बॉडी इस लेवल के नीचे क्लोज हो, ठीक है, ठीक है, नाइस। लैग हो गया था क्या? हेलो 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 हेलो, इज एवरीथिंग ऑल राइट? इज एवरीथिंग ऑल राइट नाउ? हेलो हेलो, वाईफाई गंद, क्या बोलूँ मैं अभी।
इज एवरीथिंग फाइन, इज एवरीथिंग फाइन, इज एवरीथिंग फाइन, इज एवरीथिंग फाइन। जो लोग स्ट्रीम पर है फटाफट लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। वी आर बैक, आई होप वी आर बैक, आई होप वी आर बैक, वी आर बैक, वी आर बैक, वी आर बैक। ओके चलो ठीक है, फक एवरीथिंग, फक एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं। माय बैड, थोड़ा वाईफाई थोड़ा फक कर देता बीच बीच में, बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन। So what is the level right now? Okay, so it the trend line that you were able to see below, right? The trend line has been broke, right? Trend line यहाँ पे टूट चुका है। What is the most probable thing? There is a high chances that this can be a manipulation at certain level, right? What people are trying to observe right now, that it is coming down, it is going up, it's coming down, it's going up. But this is a level right now where you will be able to see some kind of breakout, and but we cannot consider this as a breakout कि यहाँ से directly market नीचे ही जाएगा। Gold might continue नीचे, but we need some sort of confirmation ताकि हम उसको यूज़ करके we can be like चल ठीक है यहाँ से हम ट्रेड अभी ले सकते हैं, ठीक है। सो डोंट गेट पैनिक, डोंट गेट टू एक्साइटेड जस्ट बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। एंड नाइस नाइस लेवल। अगर डायरेक्ट जो नेक्स्ट लेवल होगा यहाँ से वो डायरेक्टली ये वाला होगा, ठीक है। अगर आता है तो देर विल बी रीटेस्ट। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, राइट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस टाइप का तुमको देखने को मिल सकता है एट दिस पॉइंट, ठीक है। देर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर, 1 मिनट टाइम फ्रेम इज टू सॉर्टेड एट दिस पॉइंट, ठीक है। देर आर टू पॉसिबिलिटीज, तुम अगर ध्यान से देखोगे, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस इन जस्ट अ सेकेंड, ओके। यहाँ से ब्रेक हुआ, राइट, देर आर टू मेनी पीपल जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया, डेफिनेटली, राइट, देर आर टू मेनी पीपल हु सोल्ड फ्रॉम दिस लेवल। What is gonna happen? There is two true probabilities here, okay. Either it's just gonna retest at this level, break हुआ, retest, and it's gonna come to this level, right? This is like a one probability right now. What is the second probability? That this thing is completely a manipulation, and ये बस यहाँ से मैनिपुलेट करके डायरेक्टली अभी यहाँ पे बट रीटेस्ट नहीं करेगा। रीटेस्ट के बाद हो सकता है डायरेक्टली ये वाला लेवल भी अचीव कर सकता है। देर आर टू पॉसिबिलिटीज राइट नाउ। तो व्हाट वी आर लुकिंग एट कि कोई कंफर्मेशन हमें मिले ताकि हम वो जो दो पॉसिबिलिटीज़ में से एक को हम बोल सकते हैं कि अच्छा वो वाला तो आउट हो चुका है, नाउ दिस इज़ द पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन और दिस माइट हैपन राइट नाउ इन द मार्केट। So on 1 minute you see that there was not really any retest, okay। ये वाला कैंडल अगर तुम retest की तरह पकड़ रहे हो then I don't think so we can consider that as a retest, but yeah, just hold on and you'll be able to see lot more in the market, okay। Nice support at this level. I think 1 minute is still pending. See, on 5 minute it is trying to like move, okay। let me see some large perspective of this. ओके, देर आर, जैसे तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे दो लेवल से जहाँ पर गोल्ड को जाना ही जाना है। दिस इज वन लेवल दैट गोल्ड हैज़ टू ट्रैवल, दिस इज अनदर लेवल दैट गोल्ड हैज़ टू ट्रैवल, राइट। बट कौन से लेवल पे सबसे पहले जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट वी आर फिगरिंग आउट राइट नाउ। स्टार्ट फ्रॉम अप एंड देन लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ से तुम अभी कुछ भी एक्शन या कुछ भी ट्रेड नहीं ले सकते एट दिस पॉइंट, ठीक है। यू गॉटा वेट फॉर सम टाइम, ओके। इंटरेस्टिंग गैप डाउन कैंडल, no it's not a gap down, kind of, not much, ठीक है, but no it's not actually, you see this, it's not। sweep, okay।
सपोर्ट मैंने कौन से लेवल पे मार्क किया था, होल्ड अप, नो, इस लेवल पे किया था, राइट। सो राइट नाउ इट इज इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, इंटरेस्टिंग। देख रहे हो, अगर तुम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे, स्टिल देर इज़ अ गुड सपोर्ट एट दिस एरिया, ठीक है। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग, इट कैन बाउंस फ्रॉम दिस एरिया, हाई पॉसिबिलिटी, बट इट नीड सम sort of like confirmation, and also there is a liquidity pending at this area, and we can also move this to this, ठीक है। if it's gonna come to this level, I am pretty much interested in वहाँ से लॉन्ग कर सकता है, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो। यू सी दिस, इस लेवल से फिर से बाउंस किया है, एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, देर इज़ नो गैप अप, देर इज़ नो फेयर वैली गैप एट दिस एरिया, सो yeah, that is also a problem. I feel like ये कैंडल रिजेक्ट कर सकता है, ओके okay? नाउ आई एम सीइंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और लार्ज पर्सपेक्टिव। तो समझ रहे हो, जब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, आई वॉज लुकिंग एट इट फ्रॉम लाइक अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट आई थिंक वो भी यूज़ में आ सकता है अगर तुम इसको थोड़ा और नोटिस करोगे। दिस लेवल इज स्टिल फार मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया। कितने कैंडल चाहिए अगर इसको टच करना है, तो एक कैंडल में भी हो सकता है। इफ आई रिमूव दिस, ठीक है, एंड अभी तो जो पिक्चर दिख रही है, ओके, व्हाट इज द पिक्चर राइट नाउ, राइट, दिस इज द पिक्चर दैट वी आर एबल टू सी, बट नो, अगर तुम देखोगे इस वाला ये जो दिस इज अ एरिया, इट इज़ वेरी क्लटर्ड राइट नाउ, ओके, देर इज़ नो सच साइन एज इन लाइक वेर इट रियली वॉन्ट्स टू मूव। फॉर दैट वी हैव टू थोड़ा go थोड़ा crazy. Just a second guys, I'm getting a call. we're back. ठीक है, जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। वी माइट एबल टू सी सम क्रेजी मूव, एंड हो सकता है हम उसे कैप्चर करें वेरी सून। द ओनली थिंग इज़ दैट मैं तुम लोगों को ज़्यादा होप्स नहीं देना चाहता एट दिस पॉइंट, समझ रहे हो, बिकॉज देन ब्रो लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोज गाय जहाँ पर तुमको आके सारी चीज़ें लाइक होप टाइप मिले, और जहाँ पे लगे कि ओ शिट यहाँ से हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता। जब तक मेरे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं आएगा, आई विल नॉट टेल यू ऑल कि उस तरीके से तुम उसको ऑपरेट करो, ठीक है। राज गायकवाड़, ओ राज गायकवाड़ इन द हाउस, अब तो मिलेगा ही मिलेगा सेटअप डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं जैसे मैंने बोला था, हो सकता है देर आर टू पॉसिबिलिटी, जब इसको ब्रेक किया राइट, ये वाले लेवल को भी हम टच कर सकते हैं वेरी सून, ठीक है। बट यहाँ से अगर रिजेक्शन आएगा देन वी वोंट बी एबल टू सी सम यहाँ पे चाहिए यार, अगर तुम रिटेस्ट की बात कर रहे हो तो देन आई नीड दिस एरिया, बट हो सकता है इसको अगर ब्रेक कर दे देन विल हैव टू चेंज द प्लान कम्प्लीटली। कूल, ठीक है, वेटिंग फॉर यू टू, ओह अच्छा, लेवल्स तो अभी तक नहीं है ब्रदर, ऑनेस्टली बताऊँ, आई बी वेरी फ्रैंक,
बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेशन है। एंड आई नो व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू डू राइट नाउ। द ओनली थिंग इज़ दैट जो लोग भी अभी पेशेंस नहीं पकड़ेंगे या जो लोग पेशेंस से नहीं रहेंगे, देर आर हाई पॉसिबिलिटी दे गोना फक अप राइट नाउ, ठीक है। वी नीड दिस एरिया टू गेट फिल्ड अप। बट अगर ये वाला भी होता है तो देन इट्स प्रीटी गुड, बिकॉज अगर तुम देखोगे इट इज़ डूइंग दिस, ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ अ रीटेस्ट ओनली। आई हैव सीन दिस बिफोर यार, ये वाला मैंने देखा है पहले। द ओनली थिंग इज़ दैट, ठीक है, एक बार मैं BTC देख लेता है, रुक जाओ, थोड़ा BTC पे फोकस नहीं कर रहा है। क्रेजी, ओके, ठीक है, कुछ नहीं है, ये वाला लेवल फिल हो जाएगा, ठीक है। वेट, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है इस लेवल पे आके फिर से फिल हो जाए, ठीक है। दैट इज़ BTC। गोल्ड पे वापस आता है, देखो वही होता है, अगर तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तुम्हें लगेगा कि ओ इट्स काइंड ऑफ सॉर्टेड नाउ दिस एंड दैट वट एवर इट इज़, राइट। बट अगर तुम उसी को अगर थोड़ा लार्ज पर्सपेक्टिव से देखोगे एंड अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, लाइक लुक एट दिस कैंडल रूट, लुक एट द प्रीवियस कैंडल, ये कैंडल थी, व्हाट इज दिस कैंडल इज समथिंग दैट यू शुड नॉट बाय और सेल। तुम समझ रहे हो, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाले जैसे कैंडल होते हैं, ये इस लेवल पे तुम्हें हमेशा वेट करना होता है, बिकॉज इट मैनिपुलेटेड फ्रॉम बोथ द लेवल्स, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ गोल्ड मैनिपुलेट्स फ्रॉम बोथ द लेवल, गोल्ड मैनिपुलेट्स फ्रॉम बोथ द लेवल। सो अगर ये सपोर्ट से एज इन लाइक जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा था उसके साइड से अगर मैनिपुलेट कर रहा है, देन ऊपर से साइड से भी मैनिपुलेट कर रहा है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू कम टू द कंक्लूजन दैट व्हाट इज द गोल दैट इज ट्राइंग टू डू राइट नाउ, ओके। वेट, व्हाट द फक इज दिस, यू सी दिस वॉज द प्रीवियस सपोर्ट जो मार्केट ने लिया था, BTC। आई जस्ट टोल्ड यू नो BTC। BTC इवेंचुअली ऊपर ही जाएगा अभी फिलहाल, जितना डंप होना था हो चुका है। ठीक है, बाय कर सकते हो BTC में अगर करना है तो। 1 2 3, थोड़ा वेट करो। अगर बाइंग भी कर रहे हो तो थोड़ा वेट करो। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एरिया डू,
It did went up, right? But again, it's rejecting from that area. I need this, at least this. समझ रहे हो? Yes, it is. Boys, um, अबे अटक क्यों रहा है भाई? Is it loading? Is it loading? Is it loading? Is it loading? My bad, my bad, my bad. I think थोड़ा वाईफाई आज ना थोड़ा दिक्कत दे रहा है ब्रदर, so don't mind. It is giving दिक्कत. Wow, damn, people are buying from this level. I don't think so we should buy from here. I don't think. I mean, let them do what they are doing, but like I would not suggest कि यहाँ से अगर तुम buy कर सकते हो. I would not suggest. थोड़ा अगर suggest भी करूँगा तो थोड़ा wait के बाद करूँगा, इतना जल्दी नहीं, ठीक है? तो understand the perspective, the more larger perspective you have in the mind about the market, then you'll be able to understand that we cannot directly buy from this level. Nice. Good. ठीक है? Nice छे. देखो ऐसा नहीं कि मैं कम्प्लीटली नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग इट टू कम टू सर्टन लेवल जो कि हमें चाहिए इवेंचुअली. एंड द ओनली थिंग इज दैट इट कैन बी फुल्ली रिवर्स दैट. लाइक दिस इज द वन थिंग दैट आई कैन कॉल कि ओके ठीक है, इट इज़ रीटेस्टिंग राइट नाउ, राइट. तो रीटेस्ट को आई कैन नॉट बी लाइक ओके नाउ इट इज़ इन्वाइटिंग द बायर्स एंड दिस एंड दैट, लाइक यू नो रीटेस्ट में भी मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता है आई कैन नॉट बाय फ्रॉम दिस लेवल. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. जब तक वो वाला लेवल क्रॉस नहीं होता वी कैन नॉट बाय फ्रॉम दैट लेवल एज वेल. यू नीड टू मेक दैट, you need to like be prepared for that also. Nice going up. ठीक है, nice candle, very nice candle. I think the buyers are gonna be like very happy right now, but at the same time I feel like it's inviting buyers right now. ठीक है. The fuck is wrong with my Wi-Fi, dude? क्या आवाज़ आ रही है? Is everything all right? Is everything all right? Yes, everything is all right. तो अभी देखो, नाउ गोल्ड इज एट इंटरेस्टिंग पोजिशन. जो पोजिशन मुझे चाहिए था ये वाला, राइट, दिस लाइन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ओके, उस लाइन पे ऑलरेडी आ चुका है. नाउ 6 seconds आर रिमेनिंग. इट इज स्टिल क्रॉसिंग दैट एंड इट इज गोइंग अप, बट स्टिल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग. ओके, थोड़ा और वेट तो बनता है. ठीक है, नाइस कैंडल. अगर ये वाली दिस कैंडल
राइट। ये वाली कैंडल अभी रिजेक्शन देगी बाय द वे, अगर रिजेक्शन नहीं देती है तो देन देयर विल बी अ फेयर वैल्यू गैप एट दिस पॉइंट, ठीक है। वी वांट सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन इस कैंडल पे अभी फिलहाल। नाइस मूव, नाइस, ठीक है। नो फोमो, नो फोमो, जस्ट बिकॉज इट्स गोइंग अप, नो फोमो, नो फकिंग फोमो, ओके, नो फकिंग फोमो। चिल आउट, चिल आउट, चिल आउट, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, चिल आउट। जस्ट 2 कैंडल्स, ओके, दूसरी कैंडल अभी तक बनी भी नहीं है, सो चिल द फक आउट। You might able to see some sort of rejection, so chill out. Also people who are here new, like subscribe to the channel, right? Let's go, let's fucking go. What I told you, you might able to see some rejection, so chill the fuck out, okay, chill out. So yeah, थोड़ा वेट करो, ज़्यादा रश मत करो, ठीक है। अगर अकाउंट अपना सेव रखना है, बहुत प्लानिंग के साथ अगर ट्रेड करोगे तो आप अकाउंट बचा रहेगा, साइकोलॉजी भी फिक्स रहेगी, सारी चीज़ें रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा भद्दी जैसे ट्रेड लोगे कहीं पे भी, ठीक है, तो डेफिनेटली देन हर जगह पे ट्रेड लेने का मन करेगा, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। देन यू विल एंड अप ओवर ट्रेडिंग एंड दिस एंड दैट, एंड आई एम नॉट सीइंग दिस। अगर रिजेक्ट किया दैट डजंट मीन्स कि लाइक पूरा ही नीचे आएगा, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। अगर रिजेक्शन लेता है, देर आर still 3 minutes left for this candle. You're able to see this, right? 3 minutes left. 1 मिनट पे जाने दो मुझे, 1 सेकंड, आई वांट टू गो टू 1 मिनट। नाइस, ठीक है। ओ, यू सॉ दैट, इसीलिए मैं बोल रहा था रुक जाओ, बाइंग नहीं करनी है। दिस वाज द रीज़न, दिस वाज द रीज़न। अभी एक चीज़ इंटरेस्टिंग होगी, राइट, इट वेंट अप, राइट, दिस इज द लिक्विडिटी स्वीप, ओके, द रीसेंट हाई, दिस वाज द रीसेंट हाई। मैं ये वाला एक बार हटा देता हूँ, ये वाला लेवल, राइट, दिस वाज द रीसेंट हाई। व्हाट यू आर एबल टू सी व्हेन मार्केट, देयर आर 2 रीसेंट हाइज, राइट। ये वाला हाई था, राइट, मार्केट केम, broke that high, took some liquidity, came down, and this was the level, right? Again came back, again went up, took some liquidity, it went, last वाला जो high था उसको भी break करके now it's coming down, right? But still थोड़ा we need some sort of confirmation। अगर इसको ये last अगर हुआ, then this is FEG on 5 minute, okay? मैं चाहता हूँ ये एफिज ऐसे ही प्रोटेक्टेड रहे, इसको कोई भी टच ना करे, कोई भी कैंडल इनवैलिडेट ना करे, देन वी माइट प्लान समथिंग, ठीक है। आई थिंक दिस कैंडल इज गोना नॉट मेक दैट एफिजी, इज इट गोना? 1 minute left, hold up, okay? See, it's trying to invalidate that. If it's going to invalidate that, then the high possibility that this is the next level that you will be able to see, ठीक है। People who bought from here, I think mostly stop loss सबके यही पे थे, right? Still बहुत सारे लोगों के stop loss अभी तक pending है, okay? जिन जिन लोगों ने बाई किया है उन लोगों के स्टॉप लॉस अभी तक पेंडिंग है। ऑल्सो एट दिस पॉइंट यू विल बी एबल टू सी देयर इज़ नो फेयर वैल्यू गैप बिकॉज इट डिड केम टू दिस लेवल। जो फेयर वैल्यू गैप मैं चाहता था मार्केट में क्रिएट हो, वो क्रिएट नहीं हुआ है, एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ एक्चुअली। वेयर एम आई लुकिंग डू लाइक, ओके, ठीक है। Again took support at that level and like now trying to go up. Come on dog, shit, look at that move. ठीक है, nice. Now there is a possibility that it might go up. You see this? Chalo, let's think that we're buying from here, okay? Let's think about this. We're not actually buying, okay? Just figure this shit out, okay? Let's take this shit out. चलो मैं मान लेता हूँ बहुत सारे लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस है,
ठीक है, चलो वो भी कर लेते हैं. नाउ सी व्हाट्स गोना हैपन विद द स्टॉप लॉसेस. Like, I'm not trying to go against the market and this and that. Honestly, I'm telling you, this is like a very fair decision if we take on 1 minute. ठीक है, 2 बारी रिजेक्शन आया यहाँ पे. Is it gonna invalidate that? इसका रिजेक्शन चाहिए ये 1 मिनट का. देन दैट वुड बी थोड़ा इंटरेस्टिंग. 12 seconds. I think the rejection will be on 5 minute. Let me see कितना मिनट बचा है. 1.5 मिनट बचा है. Okay, no, it's going up. Nice. ठीक है, वेरी सॉलिड एरिया. ठीक है, ठीक है. सो जो सेकंड प्रोबेबिलिटी थी जो मैंने बोला था, राइट, अगर तुम वापस जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा सेकंड प्रोबेबिलिटी. वी वर राइट अबाउट द सेकंड प्रोबेबिलिटी. व्हाट हैपेंड, राइट. सो दिस इज व्हाट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट जिन जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया था, राइट, जैसे मैंने आई थिंक पहले भी बोला था, जिन जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया था, सो जस्ट बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, एंड डेफिनेटली देयर आर पीपल जिन लोगों ने यहाँ से भी सेल किया था बिकॉज यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था. ठीक है, सो वो लोग सारे मार्केट से अभी ऑलरेडी आउट हो चुके हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट. बहुत सारे वो जो लोग सारे जिन लोगों ने सेल किया था एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट और वट एवर इट इज़, वो सारे लोग मार्केट से बाहर हो चुके हैं. राइट नाउ इट इज़ द बायर्स का स्टॉप लॉस खाना अभी तक बचा है. ठीक है, सेलर्स सारे निकल चुके हैं. नाउ बायर्स का स्टॉप लॉस खाना बचा है. ठीक है, बायर्स का स्टॉप लॉस इस एरियाज पे है, ये वाला एरिया. ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, समझ रहे हो. अंडरस्टैंड. अगर तुम्हें अपसाइड मार्केट में इतना बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है, छोटे स्टॉप लॉस वाले लोग यहीं पे भी हट जाते हैं. एटलीस्ट इट फाइनली डिड कम टू दिस जोन. ठीक है, जो हम पहले से चाहते थे कि मार्केट इस लेवल पे आए, देन वी कैन प्लान समथिंग, राइट. एंड फाइनली इट डिड. ओके, सो अगर यहाँ से ब्रेक होता है देन दिस इज योर नेक्स्ट लेवल, दिस इज योर नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट. 5 मिनट. Okay, it is rejecting on this 15 minute.
there is a FUG that you'll be able to see on 15 minute, by the way. इट इज़ स्टिल नॉट डिसाइडेड कि एफ क्रिएट होगा या नहीं, ठीक है, बिकॉज अभी तक 8 मिनट बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में. हो सकता है एफ भी उसको इनवैलिडेट कर दे. देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दैट टू, ठीक है. यहाँ से रिजेक्शन मिला, हो सकता है इस वाले लेवल तक भी विक आ जाए. तो इसका मतलब होगा क्या, ये वाला जो 15 मिनट का जो एफ इट गोना बी इनवैलिडेटेड, मतलब पूरा वो उसका ज़ीरो हो जाएगा वैल्यू, ठीक है. But if you see, there is nothing on 5 minute. Okay, that FUG was on 15 minute, but it's not on 5 minute. This might be the possibility one again, right? But I feel like most probably dump hoga. So yeah, wait for that. देखो यहाँ का जो हाई है ये वाला है, एटलीस्ट वी नीड कि ये वाला हाई ब्रेक कर दे तब जाके हम कुछ सोच सकते हैं, ठीक है. Let me just get some water. Okay, we're back, ठीक है. Nice. It did reject that area as well, ठीक है. दिस हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. दिस हैपन मोस्ट ऑफ, अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी ये वाला लेवल फाइंड अगर तुमको मिलता है तो हमेशा याद रखना, मैं तुमको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है. दो चीज़ें, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम देखोगे, ये वाला लेवल मैं एक बार हटा देता हूँ. नेक्स्ट टाइम जब भी ये सेम चीज़ तुम्हारे साथ होगी, अंडरस्टैंड किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है. सो देखने को क्या मिला तुमको, ये वाला ये सपोर्ट था जिसके मार्केट ने दो बार इस चीज़ को सपोर्ट लिया था. ओके, सॉरी, रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ था, यहाँ से 2 बारी रिजेक्शन मिला है, ठीक है. सेकेंड थिंग, अगर तुम देखोगे, अगर यहाँ से तुम एक ट्रेंड लाइन मार्क करोगे जो बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है. दिस वॉज द फर्स्ट रिजेक्शन, दिस वॉज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रिजेक्शन, दिस इज लाइक अनदर 5th टाइम यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया था, राइट. एंड जब मार्केट इस टाइप के ट्राइंगल में कभी फंसता है हमेशा,
राइट, इट ऑलवेज हैपन्स इन द मार्केट। जब इस तरीके के ट्राइंगल में मार्केट में जब भी फंसता है तो हमेशा जब एक ट्रेंड लाइन होती है उसको ब्रेकआउट आता है, राइट। ब्रेकआउट के बाद देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी लाइक कि यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद पूरा ही नीचे चला जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स कि वहाँ से एक बार ब्रेकआउट आता है एंड ब्रेकआउट आने के बाद डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ से सेल कर देते हैं, बट इवेंचुअली व्हाट हैपन्स इट वेंट हमेशा ऊपर जाता है, राइट। ऊपर जाने के बाद जब रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट पे भी एक सेलर्स को इनविटेशन मिलता है, बट इवेंचुअली देन इट गोज़ अप, ठीक है। तो ये वाला बहुत बारी फॉर्म होता है। जब भी तुम अगर मार्केट में नेक्स्ट टाइम तुम ये चीज़ देखे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। नाइस, नाइस। सी इस टाइम पर यहाँ पर देर वॉज अ चांस कि हाँ हम बोल रहे थे कि ओ अच्छा ठीक है हम यहाँ से सेल कर सकते हैं दिस एंड दैट, बट यू सी वी वेटेड लाइक मतलब वो जो था दिमाग में इट डिड चेंज, इट्स नॉट लाइक इट डिड नॉट चेंज, इट डिड चेंज समथिंग। चलो 3 मिनट बचे अभी, 3 मिनट बचे फॉर दिस कैंडल एंड लेट मी सी इफ वी आर रेडी विद द अकाउंट। Interesting level, I would say. You know what I mean? If it wants to go to this, it has to take out this liquidity. That is what I was saying. I would wait thoda or and I'm gonna go against the market. वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, ठीक है। थोड़े रेडी हो जाओ, अभी हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए 5 मिनट में। इज इट बेटर नाउ? ठीक है। ना 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 गुड लेवल, आई वुड से 9 सेकेंड। चल ठीक है, मैं 9 सेकेंड वेट करूँगा। बुलिश मार्केट है, सेल करना रिस्की होगा, बट थोड़ा वेट करो। बुलिश मार्केट है, ओके।
इट्स इन डिस्काउंट जोन राइट नाउ. कितने 9:30 हुए राइट. थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ. बाय तो बिल्कुल भी मत करना, टू लेट फॉर दैट. बट यस. Okay. Interesting rejection. Let me see. सेल कर सकते हैं बट थोड़ा मैं 10 मिनट वेट करना चाहूँगा. एटलीस्ट 10 मिनट्स. आई नो जब तुम पेशेंटली वेट करते हो बहुत सारे मोमेंट्स हो सकते हैं तुमसे मिस हो जाए, बट द होल पॉइंट इज़ दैट ओनली. नो, आप समझ रहे हो, द होल पॉइंट इज़ दैट. वही तो चाहिए. ठीक है, नाइस फॉल. इनवाइटिंग सेलर्स राइट नाउ, बट आई एम नॉट गोना एंटर. आई फील थोड़ा फिशी अबाउट दिस मूव. ठीक है, आई नो एक लिक्विड स्वीप है यहाँ पर राइट. आई नो दैट एंड इट्स अ गुड सेटअप टू लाइक सेल फ्रॉम हियर. बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जब मार्केट इस तरीके के मूवमेंट्स क्रिएट करता है तो ये डायरेक्टली हमेशा कभी भी सेलिंग की तरफ नहीं बढ़ता है. इट्स गोना गिव अस सम सॉर्ट ऑफ confirmation because just because of the liquidity sweep we cannot do anything or we cannot take any firm decisions as of now. ठीक है, the only thing you need to focus on right now is observing the candle, observing the market, what is the next move is gonna be. एंड ये वाला कैंडल का अगर रिजेक्शन इस वाले लेवल पे है देन देर इज़ नॉट मच एफ यू जी दैट इज़ गोना क्रिएट एट दिस साइड. ठीक है, बट यहाँ पर एक इन्वर्स एफ यू जी है अगर तुम देखोगे ध्यान से. वन थिंग दैट यू विल बी एबल टू नोटिस दैट अगर ये कैंडल नीचे आके पूरा ये भी हो रहा है, ऊपर रिजेक्ट भी हो रहा है. ठीक है, तुम यहाँ से डायरेक्टली भी सेलिंग नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट. एंड वन और टू कैंडल्स एटलीस्ट हमें देखनी पड़ेगी बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. एंड यप दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. ठीक है, ठीक है, नहीं करते अभी फ़िलहाल तो. ठीक है, नहीं करता है, नहीं करता है. इट्स फुल्ली बुलिश राइट नाउ. थोड़ा सेलिंग पे नहीं ध्यान देते, थोड़ा वेट करते. जैसे ही ये कन्फर्मेशन आ जाएगा मैं तुमको बता दूंगा कि हाँ चलो यहाँ से हम कर सकते हैं. बट वही होता है एंटरिंग टू अर्ली एंड देन बाद में थोड़ा स्टॉप लॉस या हिट खाना या बड़ा स्टॉप लॉस रखना. उससे अच्छा है कि यार उस मोमेंट का वेट करो जहाँ पर एक्चुअली तुम्हें स्टॉप लॉस अगर तुम छोटा भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मुझे पता है ये वाला कैंडल भी अगर ब्लैक क्रिएट होगा यानी कि नीचे जाएगा तो हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट हो. ठीक है, बट वही पॉइंट है, वही क्रिएट नहीं करना है. ठीक है, वही फोमो क्रिएट नहीं करना है. मुझे लगता है कि इस लेवल पे ये फिर से आएगा.
इस लेवल पे, समझ रहे हो, इस लेवल पे फिर से आएगा एंड फिर वहाँ से तुमको कुछ देखने को मिल सकता है. ऑल्सो पीपल हु आर वॉचिंग, द पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज देन तुम सब्सक्राइब करोगे देन यू विल बी एबल टू सी मी डेली, राइट. यहाँ पे डेली आके हम लाइव करते हैं मॉर्निंग में एंड इन द इवनिंग ऑल्सो. आज मॉर्निंग में नहीं हो पाया बट इवेंचुअली कल से वो भी स्टार्ट हो जाएगा. सो पीपल हु आर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द स्ट्रीम, देन नोटिफिकेशन को ऑन करना, देन यू विल बी एबल टू सी मी एंड यस दैट्स इट. एंड एक्चुअली अगर पसंद है लाइव स्ट्रीम देखना तभी सब्सक्राइब करना, डू नॉट सब्सक्राइब अदरवाइज, ठीक है. आई सी दैट, ठीक है, लॉट ऑफ रिजेक्शन, आई सी दिस रिजेक्शन एज वेल, बट यही है कि आई कैन नॉट डिसाइड दिस कैंडल. ये कैंडल को भी अभी 3 मिनट बचे हैं क्लोज होने में. एक तो 3 मिनट पे ही इस लेवल पे आएगी या तो रिजेक्ट करेगी, ठीक है. सो देर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दैट कैंडल एज वेल. ओके, नाइस, दिस इज ऑल्सो नाइस, नॉट बैड. जैसे मैंने बोला था ये कैंडल में पोटेंशियल है, एक तो ये रिजेक्ट करेगी या तो डायरेक्टली वो वाले लेवल पे आ जाएगी. फिलहाल अभी इट इज़ ट्राइंग टू रिजेक्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है. देखो जब विक्स बड़े बड़े क्रिएट होते देर आर वेरी लेस चांसेस जहाँ पर मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप या कोई एक गैप क्रिएट हो, ठीक है. और गैप क्रिएट नहीं होता है ना, थोड़ा मुश्किल होता है उस लेवल को फाइंड आउट करना एंड देन एक्चुअली फाइंडिंग आउट द सेटअप्स, बिकॉज देन आई मोस्टली गो फॉर द सेटअप. जो मेरे सेटअप्स हैं आई मोस्टली फॉलो दैट. जब तक सेटअप क्रिएट नहीं हो रहा है, रैंडमली अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मोस्टली आई डू नॉट एंटर बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन एट दैट पॉइंट, ठीक है. देन हो सकता है तुम्हारा अकाउंट भी उस टाइम पर थोड़ा धक्का खाए, तो मैं हमेशा थोड़ा प्रेफर करता हूँ उस टाइम पे वेट करना. एंड यस, नाइस रिजेक्शन, ठीक है. ये वाला लेवल थोड़ा ध्यान में रखना प्लीज़. कूल, ठीक है, उसको भी ब्रेक दे दिया है. 6 मिनट हियर एंड 1-2 मिनट हियर, ठीक है. ठीक है, जो लेवल था ये वाला लेवल, इस लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है यहाँ से भी, बट यहाँ से मोस्टली ऊपर चला जाएगा अभी ये. देखो कंफर्मेशन तो मुझे इधर ही मिल गया था. तुम अगर ध्यान से देखोगे जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ये वाला कैंडल बना था तभी मैं सोच रहा था सेल करने का. तुम समझ रहे हो. एनी ट्रेस टुडे, थोड़ा टाइम दो यार, मैं रैंडम ट्रेस नहीं लेना चाहता. दैट इज, यू सी इट इज़ गोइंग अप, दिस इज लाइक मोस्टली लेवल, ये लेवल पे. रिजेक्शन आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा रिजेक्शन आए. I want this to come to this level, honestly. This level. तब जाके मैं कुछ सोच सकता हूँ. ओके, मैं बता देता हूँ what I'm looking for, ठीक है. क्या मैं बता दूँ what I'm looking for? I'm looking for this. I'm looking for this, ठीक है. I'm looking for this. तुम समझ रहे हो. डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे लोगों ने सेल किया है. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सोल्ड फ्रॉम दिस एरिया, राइट. बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सेल किया है. बट व्हाट हैपेंड नाउ, दिस इज़ व्हाई आई डिड नॉट सोल्ड, ठीक है. शॉर्ट हमने क्यों नहीं किया, इसी रीज़न की वजह से. सी ये वाला कैंडल ऑलमोस्ट सबके स्टॉप लॉस खा जाएगा. अभी ये वाला कैंडल ऑलमोस्ट सबके स्टॉप लॉस खा जाएगा जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है.
इसलिए बोलते हो थोड़ा वेट किया करो, जल्दी बहुत करते हो तुम लोग, ठीक है। फोकस ऑन दैट फकिंग कैंडल राइट नाउ, ठीक है। फोकस ऑन दैट, आई एम वेरी हाइप्ड। अगर आज अगर क्रेजी ट्रेड जो मैं बोलता हूँ अगर वो बढ़िया निकल जाता है, जो कि यार तुम देख सकते हो, ठीक है, प्रीवियसली भी अगर तुम देखोगे हिस्ट्री क्रेजी रहा है, ठीक है, हिस्ट्री हमेशा क्रेजी रहता है, समझ रहे हो। इस अकाउंट को ना 3,000 था या 2,000 था ये अकाउंट, समझ रहे हो, 2,000 था ये अकाउंट, तुम्हारे सामने पूरी लाइव स्ट्रीम जाके देख लो, 25 दिन 26 दिन 27 दिन जितना भी लाइव स्ट्रीम किया है, हर एक ट्रेड जितना भी ट्रेड है सारा लाइव स्ट्रीम पे लिया है, हर एक ट्रेड, ठीक है। तो कभी ना क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन कोई कर तो नहीं सकता वैसे, और कर भी लेगा तो क्या ही कर लेगा। यू सी दैट रिजेक्शन 15 मिनट पे, इसीलिए मैं थोड़ा डाइसी हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे सेल नहीं कर रहा था, बिकॉज मुझे पता है इतना इजी नहीं होगा, डायरेक्टली नीचे आना नहीं होगा। बहुत रेयर के सिनेरियो होते हैं जहाँ पर तुम्हें लगता है कि ओ शिट ये नीचे आ सकता है और एक्चुअली आ जाता है, तुम समझ रहे हो। बट मोस्टली गोल्ड मैनिपुलेट्स, गोल्ड हमेशा दो तरफ से मैनिपुलेट कर रहा है यार, इसमें तो एक तरफ से तो करेगा ही ना, समझ रहे हो। जिन जिन लोगों ने सिंपल, जैसे मैंने बोला, जिन जिन लोगों ने यहाँ, मैं चाहता हूँ इस लेवल पे आए, राइट, इस लेवल पे। द ओनली थिंग इज़ दैट इस लेवल पे आना करके पीछे भी एक रीज़न है, राइट। एंड हाँ, वेट लेट मी रिमूव दिस, ठीक है, इस पे फोकस करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऊपर जाएगा अभी यहाँ से भी, थोड़ा और, थोड़ा और रुक जाओ, वेट अ सेकेंड, ओके। लाइक कर दो एंड यस, थोड़ा वेट करो एंड लाइक कर दो। आई नो स्ट्रीम्स लंबी होती है एंड उसके बाद थोड़ा टाइम भी लगता है, बट गाइज दिस इज हाउ इट इज़, इफ़ यू वांट टू मेक मनी ब्रो, यू गोटा वेट, यू गोटा फकिंग वेट, ठीक है। उसके बिना कोई भी पैसा नहीं बनता है। रैंडमली ट्रेड लेके मैं तुम लोगों का अकाउंट ना ब्लो करना चाहता हूँ, ना मैं खुद का अकाउंट ब्लो करना चाहता हूँ, सिंपल है। मेरा रूल होता है, रूल्स के साथ चलता हूँ मैं, उसके अलावा मैं कोई बकचोदी नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। एंड वही है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, साथ में। तो वही है, अभी फ़िलहाल थोड़ा रुक जाओ एंड 15 मिनट का जो कैंडल है उसको क्लोज होने में 1.5 मिनट बचा है, तो 1.5 मिनट उधर वेट करना पड़ेगा, एंड सेम 1.5 मिनट यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा थोड़ा। और मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा और ऊपर जाए, ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाए इस लेवल तक एटलीस्ट, आई मीन उतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इस लेवल पे जाना। 15 मिनट स्टक एट दैट लेवल। देखो ओवरऑल इट्स बुलिश, ठीक है, देर इज़ नो डाउट इट्स नॉट बुलिश, ओवरऑल इट्स बुलिश, बट या सेलर्स को इनवाइट कर रहा है डेफिनेटली, एंड दिस कैंडल इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाँ जी, अभी देखो, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन हमने ये वाला जो था, ये कहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है देखो, यू सी दैट, देख रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है देन इट डजंट वांट टू कम डाउन, तो समझ रहे हो। दिस लेवल इज सो गुड। ठीक है, वेट करते हैं।
आई थिंक 1 मिनट पे शिफ्ट होने का थोड़ा फ़ायदा तो हुआ, बिकॉज देन वी अंडरस्टूड दैट दैट ट्रेंड लाइन इज़ नॉट ओनली फॉर दिस लेवल्स, ये वाले लेवल इधर भी फॉलो कर रही है, ठीक है, दैट लेवल इज़ वेरी क्रूशल। हेलो ब्रदर, हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। देख रहे हो, यहाँ पे भी वो क्लियरली दिख रहा है, जो फॉर्म था यहाँ पे भी वो क्लियरली दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। वो लेवल अभी तक उसको टेस्ट कर रहा है मार्केट, गोल्ड, एंड गोल्ड इज गोना टेस्ट दैट लेवल फॉर मोर 5 मिनट्स। 1 मिनट पे यू विल बी एबल टू सी मोर क्लैरिटी, ठीक है। यहाँ से फिर से रिजेक्शन अगर देता है, देन नेक्स्ट लेवल, यू नो व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल। यहाँ से ये वाला ट्रेड भी हो सकता है वैसे, बट बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो। डेली टाइमिंग का क्या ब्रो, लाइव स्ट्रीम की ब्रो, डेली टाइमिंग क्या है? लाइव स्ट्रीम की डेली टाइमिंग जो है, मैं मॉर्निंग में लाइक आफ्टरनून में 12-1 बजे आता हूँ, एंड रात में 8:30 बजे, 8:30 बजे यू विल बी एबल टू सी मी डेली। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि तुम लोग डेली मुझे देख पाओ, एंड डेली बैठ के यहाँ पे सब कुछ क्रेजी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सॉर्टेड। जो जो लोग देख रहे हैं अभी लाइक कर दो। देखो यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं, मतलब मैं ले सकता हूँ, बट वही है कि बहुत छोटा ट्रेड हो जाएगा, एंड डजन रियली मेक सेंस, तुम समझ रहे हो। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है तो, ओके, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर ले भी सकते हैं तो ट्रेड के लिए हमेशा वेट करना पड़ता है, इस लेवल को अगर ब्रेक होता है तभी जाके वो डिसाइड होगा कि इस लेवल पे जाएगा, उसके अलावा वो डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। गुड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, एंड देयर यू गो। Bro, I want to sell so fucking badly, but I'm not able to find any setups right now. मतलब setup is there, but like I want some confirmation, right? I want some confirmation. That is what I'm trying to say here. 21 seconds, 25 seconds, ठीक है। से ब्रेकआउट भी आए। 2 minute is more. Nope. Nope, रुक जाओ। सी बोला था ना, थोड़ा रिजेक्शन का वेट करो, ये पूरा रिजेक्ट करेगा, पूरा ही रिजेक्ट करेगा 1.5 मिनट में। सिल्वर आई हैवंट सीन, अभी आई एम थोड़ा फोकस्ड ऑन गोल्ड राइट नाउ, तो थोड़ा वेट करो, ठीक है। एंड जो जो लोग अभी देख रहे हैं, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब, ताकि मैं डेली हम लोग साथ में ट्रेड कर पाए। एंड या दैट्स इट मैन, go watch daily live stream that is there on the YouTube, go watch some content that I have recorded, and सारी चीज़ें मैं डाली, see rejection, right? Nice, love this, love this, love this, love this, love this. अभी now I want to buy, तुम समझ रहे हो बायस कितना जल्दी चेंज होता है, बायस कितना जल्दी चेंज होता है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल, ओके। बायस बहुत जल्दी चेंज होता है। 37 seconds. दिस कैन बी अ कंप्लीट मैनिपुलेशन। इसको हो सकता है कि डायरेक्टली बोला जा रहा है कि वो इनडायरेक्टली यहाँ से रिजेक्शन मिला है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, बट दिस कैन बी अ ट्रैप, ओके। हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली भी नीचे गिरे, बट कोई कंफर्मेशन एज ऑफ नाउ नहीं है, ओके। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस डेफिनेटली, बट उसके लिए भी थोड़ा 13 सेकेंड्स। इसके बाद का जो कैंडल आएगा वो क्रेजी मूव करेगा, बाय द वे, इसके बाद वाला कैंडल क्रेजी मूव करेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा होल्ड कर लिया ये वाले कैंडल ने। मेरा सिंपल है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है देन आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन सेलिंग, बट देन मुझे ये वाला लेवल चाहिए डायरेक्ट, ये वाला, तुम समझ रहे हो।
ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली एक इन्वर्स कैंडल आया। अभी इसको किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन कंसिडर, ओ शिट, कि चलो ठीक है अभी रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद पूरा नीचे आएगा, राइट? दैट इज़ राइट टू, आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ नॉट राइट, बट एट द सेम टाइम लास्ट टाइम क्या हुआ? लास्ट टाइम भी सेम चीज़ हुआ, जब रिटेस्ट हुआ उसके बाद मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर ऊपर चला गया, एंड राइट नाउ द बायस्ड इज बुलिश, राइट? द ओवरऑल बायस्ड इज बुलिश, सो वी कैन नॉट गना गो फॉर दैट। ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी दिस राइट नाउ इन द मार्केट, ओके? यू विल बी एबल टू सी दिस राइट नाउ इन द मार्केट. Okay, this is what is going on. Cool. Okay. अकाउंट में कितने लॉट साइज ट्रेड लेनी चाहिए? आई मीन डिपेंड्स यार, ए प्लस सेटअप है, हाउ द सेटअप एंड एवरीथिंग मैटर्स, राइट? तो उसके हिसाब से किया करो, जो भी चीज़ें किया करो। ओके चलो, हो गया, इनफ। इतना वेट नहीं करता मैं, समझ रहे हो? वेट, why this candle now यार, why this candle now? ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा होल्ड करो। अगर इतना बड़ा देखो, लॉट के हिसाब से तो मैं तुमको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, डिपेंड करता है तुम्हारा सेटअप क्या है। ऑल्सो रिस्क 5%, 6%, 7% जितना तुम रिस्क कर सकते हो, तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए। सो उसके हिसाब से तुम वन लॉट, आई थिंक या यू कैन गो फॉर लाइक वन लॉट 0.7 और समथिंग लाइक दिस। नॉट वन लॉट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 0.5 इज़ नाइस, 0.4, 0.5, 0.6, धीरे धीरे अगर सेटअप के हिसाब से तुम उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है? सेटअप्स के हिसाब से तुम उसको चेंज कर सकते हो। सी सेम थिंग हैपन, ऑल अकोमुलेशन एट दिस एरिया, ठीक है? अकोमुलेटेड, नीचे मैनिपुलेट किया एंड देन ऊपर किया डिस्ट्रीब्यूट, समझ रहे हो? सो अकोमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज वर्क्स इन द मार्केट, सो मेक श्योर यू focus on that as well. ठीक है, after a lot of research and after a lot of waiting, we're going for it. सी बहुत स्टॉप लॉस बहुत इसका होगा, इसमें बहुत टाइट होगा, ठीक है? But at the same time you need to understand that like trading against the market, that I am in a favor that जहाँ पे मुझे there are high possibility that it has to like tap into that 15-minute fair early gap, right? I am pretty much interested in that, but at the same time अगर छोटा सा scalp देखा जाए तो फिर उस हिसाब से थोड़ा हम कुछ और देख सकते हैं। नाइस।
हेलो 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 सानिया इन द हाउस, फॉर रियल इन द हाउस। ओके ठीक है, चलो आगे। बट डोंट यू थिंक दैट देयर इज अ लिक्विडिटी स्वीप सेलर गोना एंटर बिकॉज आई आंसर दिस, ठीक है। ये जो कमेंट है, आई आंसर दिस वेरी सून, आई आंसर दिस, ठीक है। But I'm thinking from a different perspective altogether, okay. I see there is a liquidity sweep, I see that, I see everything, okay. But I'm thinking from a long perspective. I'm pretty much sure that I know what gold is gonna like, what gold is trying here, and क्या यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही है। थोड़ा वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है एंट्री अर्ली हो, बट कभी मतलब वियर्ड नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, एवरीथिंग हैज़ अ चांस, एंड या आई सी दैट लिक्विडिटी स्वीप, ओके। मैं देख रहा हूँ ये जो होल एरिया वो लिक्विडिटी स्वीप, राइट, एंड इट इज़ ट्राइंग टू गो डाउन राइट नाउ, इट इज़ ट्राइंग टू गो डाउन, बट राइट फॉर मी टू टेक दिस, like for me to buy from this level, it is a very crucial level, and I want to try something with this, ठीक है। I want to try something with this. Yes, I see that, I get your point, I get your point. But you need to understand that I've been usually I've been like looking at the market, like it's been 15, it's been like what, 2 hours, 3 hours I've been looking at the market right now, right. This is what I've been planning, right. I was also thinking the way you're thinking right now, okay. That's why the stop loss is this strict, right, it's very strict. सो या वेट करो, सारी चीज़ें पता चलेगी तुमको, क्यों एंट्री लिया है, क्या एंट्री लिया है, सारी चीज़ें, एंड बहुत सारा स्ट्रक्चर तुम ओवरऑल देखोगे, राइट। आई सी दैट 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप ऑल्सो, मुझे ये भी पता है 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप है, एंड आई थिंक अगर वहाँ पर वेट करते तो इट वुड हैव बीन मोर आई थिंक ग्रेट थिंग, बट या 1.5 मिनट यहाँ पर भी बचे, 1.5 मिनट थोड़ा वेट करो, इस वाली कैंडल को एक बार क्लोज होने दो 15 मिनट की, ठीक है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक ये वाला लेवल, अगर तुम बाई साइड के लिए भी कर रहे हो, जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता है, तुम लोग कोई भी, तुम में से कोई भी बाई नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी बाई नहीं करेगा। Let's do this. Fuck that shit, fuck everything, I don't care, okay. We have stop loss, we have everything, right. This is what I'm planning right now, and agar if this right, this candle 15 minute, where it is, we need the closure above this level, okay. We need the close above this level. 40 seconds. Nice, okay. Nice, okay. It is happening, but don't get too excited. I'm not gonna get too excited as well. 9 seconds. ठीक है, we'll explain everything, ठीक है। It's live, dude. सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। आई थिंक ये वाला कैंडल में थोड़ा और ज़्यादा मोमेंटम होना चाहिए, दिस कैंडल। नो वेट,
Wait. हाँ जी, 3 minutes. Nice level, I would say. No, still. स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है. Okay. So basically what I'm doing from 6% today, but I made 6%. Sell trade right now. I think, देखो, the thing is that like how I'm looking at the market right now, it's very different. That I feel like this is all manipulation. There is a high chances that market will take my stop loss as well, right? And then it can go up, but eventually you'll be able to see that like it is trying to go up, okay? And इसको scalp की तरह भी use कर सकते हो. And I see that 15-minute fair value gap also, right? This is the only thing that I'm scared of. Apart from that, I'm good. Apart from that, I'm good. So until unless market is not gonna go to this level, I cannot ask anyone to buy or whatever, right? So everybody should hold right now, and if you're in sell, continue doing that. Don't change your trade because someone else live they're like going for a buy. ठीक है. Always have your own setup, own system, and अगर तुम्हारा loss भी होता है, right, you'll be able to understand that why that happened, and you'll be able to learn from that mistake, and you will not do that same again, right? Same goes for me also. You're getting my point? Even though I have a lot of experience, even though I every trade is mostly win this and that, like, but sometimes like not every day is your day, and you need to understand that. You need to write it down and move forward. That's it. Okay. We'll be telling you everything about this. I feel today moving slow, but no, it did move nicely, dude. It did move. It manipulated a lot, but it did move nicely. Okay. Hold up, let me call the institutions. Let me ask them to like move this a little bit up. Okay. Oh shit, कॉल नहीं लग रहा है. ठीक है. Not a good candle. We will. आ गया थंबनेल. चलो, at least Vivek is making money. At least Vivek is making money. So no stress. Stressed. No, I'm not. I'm chilling. How does it look on this? Okay, taking a support. Nice. Might break that right now. And can we do this? This level. Okay. Fine. Okay. We're good. Okay. No stress. Also, people who are watching, फटाफट like कर दो stream को, right? I come live daily, and you'll be able to see trades like this, right? Let me quickly show you the history. Basically, pending orders. This is the history. Okay, total
all history. ठीक है. Okay, this account was on $200, okay, and now this is the account size. Every trade was made in public. सारे trade जो भी लिए सारे community में, sorry, previous जो lives है उसमें जाके तुम check कर सकते हो. And yeah, this is if you really want to learn trading and like, you know what I mean, if you really understand the basics from the start, you can join me. Subscribe to the channel and turn on that notification so you'll be able to see me fucking daily. Okay, चलो ठीक है. Nice candle, nice candle, but still there is a rejection, but 3 minutes left. Also I've observed one thing, जब candle move करता है and then अगर आधे time के time period में if the candle is like 5-minute candle and then अगर बीच में से rejection आता है then it mostly last में fill that rejection, right? So let's see what happens in this case. Okay, cool. चलो, let's move forward with this. Vivek, how much profit? Tell me. You are in sell, right? So tell me how much is the profit. Right now, a lot of sellers are getting invited right now. Market is inviting a lot of sellers, and that's a good thing. That's a good thing. Okay, that's a good thing for buyers. चलो, आई होप तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, जो लोग अभी देख रहे हैं, बिकॉज ऐसे बिना सब्सक्राइब कर नहीं देखना होता है, राइट? वी कॉल इट सिचुएशनशिप एंड इट्स नॉट गुड. ओके, subscribe and then be in relationship. 2 minutes left, let's fucking go. Okay, I have 2-step account currently. Nice. Crazy. You'll crack it, dude. No worries. Just join streams daily and you'll be able to find some good moves. Okay, we eventually wait most of the time, but sometimes we just enter, we start the live stream and we find some setups. Okay, sometimes it's just like in front of your eyes and you're not able to see it. Cool, let's fucking go. I like that candle. I told you, right? जब बहुत ज़्यादा rejection आता है starting में, तो last के जो minutes is try to like fill that up all the time. That I've observed, right? This is just a personal observation. I'm buying from the, can I hold till 4? I would say TP1 is fine फिलहाल, ठीक है? And that also like after this area, right? So I am buying at a very risky area, and that's what I love to do all the time, and that's what I do. I think we should be in profit, dude. We should be in profit at this point. Yep, we are in profit. Let's fucking go. $30, $38. You see that? You see that? Dude, come on, man. Don't. Right? I don't wanna. I don't want to sound too cocky, but like I like this candle, dude. I honestly like this candle. Crazy. Okay, like करो इसी बात पे फटाफट. like करो just for this candle and for the analysis जो मैंने बोला था कि when candle comes down or rejects very early, it's mostly fill later on, and this is what the filling looks like. $83 already in profit. Okay, that's why I was buying. Okay, I see that liquidity sweep, I see that, but do you think like gold is that simple? Oh, you see the liquidity sweep, now it's gonna go down. No, this is not how it happens. Okay, wait, hold karo. Still, I don't want to sound too cocky. Okay, I need one more candle like this and then I'll be like, oh shit. Okay, I'm just kidding. Traded myself. I'm not laughing on you, by the way. Okay, but like, yeah, what's the current situation right now? Still, okay, still. Don't panic. Don't think it's actually gonna go in my direction. It might go in your direction as well. Okay, let's see who wins today. Bro, this is TP1, right? And then after that, if you want to hold, you hold, but it will take time. Okay, TP will not come very easily. It will take time, so just wait for that. Cool.
Everybody looking at the chart, looking at everybody, like, subscribe, and also don't just subscribe, make sure you click on the notification. Okay, we just hit 300 subscriber. We need 1k as soon as possible. We need as soon as possible 1k subscriber. Okay, let's go, boys. 39 seconds. Okay. Do we see any fair value gap at this area? Do we see any FEG at this area? Very small FEG, I would say. See, how much is the profit? $50, right? $50, but I'm gonna like I can definitely, if I'm ready to lose this much money, then I'm not gonna like just take a profit of a $50. You're getting my point? So the system, when it comes to the system is very important. How it is very important, I'm not talking about the system that you use, right? System in a way, like my TP is fixed. TP I might move a little bit looking at the situation and the scenario, that you should be like very flexible about, but mostly you should not move your TPs. Also, your SL should be where it is in the beginning, and you might trade a little bit on this and that, but if it goes against you, it's completely fine. Okay, just make sure it doesn't happen the next time. That's it. Nice. Love that. How much is the profit? $82. Okay, yes, let's go. Invited so many sellers, crazy. Still the level is still there. Okay, this level is very crucial. We need gold to cross this level, and then we'll feel more confident about this trade. You're getting my point now. Still 2 minutes are left. Okay, 2 minutes are left. So one thing that I want to like tell you all, like जो भी लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल, बहुत सारे सेटअप्स, बहुत सारे जो फॉर्मेशन होते हैं, राइट, इट्स वेरी सिमिलर दैट हैज़ हैपेंड बिफोर. सो ऑलवेज बैक टेस्ट दैट, बिकॉज जो भी तुम्हें नज़र में दिखता है हो सकता है वो पास में भी हुआ है. जैसे ये चीज़ यहाँ पे जब मार्केट आया था ये वाला, आई हैव सीन दिस बिफोर, लाइक मैंने बोला था, आई हैव सीन दिस बिफोर, राइट. द मोर यू लुक एट द मार्केट, द मोर यू ऑब्जर्व मार्केट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ये सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव सीन, राइट. कभी कभी तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हें देख के पता चल जाता है कि क्या होने वाला है. सो इट्स जस्ट लाइक द, आई मीन द अमाउंट ऑफ टाइम you put in, and that will definitely give you the reward that you really deserve. Okay. Okay, cool. T2 doji candle, 1 minute left. Not okay, cool. I will just chill. We'll just chill. Okay. See, we can look at it from a different perspective as well. When it is coming down, we can be like, okay, now it's going up. And when we see this candle, we might be like, oh, it's inviting the buyers right now. The buyers are gonna be in the market and this and that, and it directly gonna go down. You know, that could be the possibility. But what it really makes it feel like you, it's gonna go up. That is very important. For that, you always need a confirmation, and your system and everything is gonna be there, right? Even though अगर ये कैंडल यहाँ तक भी आता है, I'm not even gonna blink. You're getting my point? I'm not even gonna blink. I'm just gonna learn from this, and I'm just gonna not do this shit again. Like trading, I'm gonna do, but not when I'm in this situation, that I will make sure that I will not do the same mistake again. You're getting my point? So yeah, that's very important. We need green. We need green. Oh, doji. Now this is complicated. Now this is complicated. Okay. No stress. But that doji is not, it was not necessary. But ठीक है.
Just a second. My bad. ओके ठीक है. टू स्लो, टू स्लो. 10:30 के बाद हो सकता है. देर विल बी अ मोमेंटम आफ्टर 10:30. लेट्स सी. ओके. This candle is just blabbering right now, dude. Meanwhile, you see this. ठीक है. जो लेवल था इस लेवल पे ऑलरेडी BTC आ चुका है. मैंने यहाँ से बोला था ये वाला लेवल जब मैंने मार्क किया था, आई सेड दैट इज़ गोना गो अप एटलीस्ट टू दिस लेवल एंड यहाँ से फिर हो सकता है थोड़ा मैनिपुलेट करे, राइट. जब ये ब्रेकआउट आया था यहाँ से मैंने बोला था बाय करने के लिए. ओके, गो बैक, वॉच द स्ट्रीम एंड आई थिंक 5 मिनट के टाइम फ्रेम दिस इज अ गुड मूव. ओके, गुड मूव. यहाँ से बोला था बाय करने के लिए. गो बैक एंड चेक. कूल. आई फील लाइक इसके बाद का कैंडल अच्छा खासा मूव ला सकता है बिकॉज इट्स मूविंग वेरी स्लो. व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस लेवल? Did create this. Okay, nice movement. ठीक है, rejection of that area. Might fill it up later on. Yep, it did. 21 seconds. This candle at least break this one. Okay, hoping. Nice, it did fill up. You see that? You did fill up. We need this. I don't mind coming to this area because then it's not gonna create a fair value gap. But yeah, sure, this much works. We need rejection of this candle. It should turn into green. I don't think so. We're in profit. Yeah, we're in profit. We're in profit. $60, $78. We're in profit. Cool. Still holding. No stress. How the you saw that? So much rejection, dude. So much rejection after that. I like that. I like that rejection. Okay, I don't mind. Cool. We need this right now. Not that. Cool. It's gonna manipulate. New candle started, right? Yes. Let's focus on 5 minute only. Okay. Let's not go to 1 minute. Okay. No. Okay. What is he trying to do?
Can we see rejection on this? See, there is no point of like looking at every candle right now. Like I'm just looking at it because I need some clarity here, and that clarity I'll definitely, like, I have the clarity before entering the trade. You're getting my point? But at the same time, I love looking at every candle, how it moves, and the that's why, like, I know when market rejects early, it fills that gap later on. So that mostly how candle behaves in this kind of situations, right? That is very important. You see this, what the 1 minute is trying to do here, okay? If you focus on this very clearly, let's see if it respects the next time as well, okay? Then we'll consider this level as a like a strong level. You're getting my point? This will remove right now. Okay. Yep, as I told you, this candle, we want this candle to be in the green. And are we in the profit? Yes, same profit, not much. Okay, I need at least how much it is here? 200 is too less, dude. 200 is too less. We'll see. Okay, we'll hold and then we'll see. Okay, it rejected pretty early, so I'm like kind of this about it right now, but just hold. 1 minute pe how you are able to see this? 1 minute pe there is like a inverted kind of hammer shit is going on, and I want to see that if it's gonna like take support off of this trend line. I'm turning 17 soon, 18 class, so it shouldn't perform close because I don't large capital. I'm constantly channeling back testing. Just wanted to, if yes, brother, you are in right direction. You are in the best direction that you could be. Not many 17 years are doing right now what you're doing. Okay, so that's pretty crazy and insane, and shout out to you for that. Okay, chalo, ठीक है. Let's not go deep into it. This candle, that candle, fuck that shit. Just look at this. Okay, I did it when I wanted to do it, and now just observe. Okay. 50 seconds for this one. Let's go. Okay, nice rejection. I don't mind that rejection. Okay, at all I don't mind that rejection. It is taking support of this area. $20 seconds. Okay, nice. It might come to this level also. 15 seconds mein this might come to this level also. You never know. Nope. It should be in green. No black. Oh, okay, cool. Okay, took support again. Okay, took support again. You see that it is taking support off of that area, right? It is taking support off of that area. But also see this is also happening. ठीक है, not bad. Cool. Love this candle from start to end. The only thing is that I do not want any rejection from the upside.
for this candle. Okay, this candle, if it rejects off of this area, then it's gonna be a little tricky, but right now it is moving pretty nicely and it should break this level as soon as possible. Okay, because this has been very tough level. Once market is gonna break that one, then it's gonna get more momentum. Okay, and hope we'll be able to break that. And yes, are we successful in that? Yes, 88 that is the running profit right now. And yeah, you see, this is what you'll be able to see. This should not come, this might come, but okay, let's see. Interesting zone, interesting setup. Should not reject off of this area, then this is the next move. अगर reject करता है तो you see that? Yes, we need this to break as soon as possible. Right now it is in the triangle. Okay, it is getting support of that area, and then it is like trying to do this and da 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 da. Okay, it's the same thing that happened here. Okay, where it was here. Okay, it's the same thing that happened at this area, but it's pretty much sorted. Like it looks pretty much sorted. You see this? It came right. जो बोला था, it came. Bro, I should do binary. You know, I'm like very good at predicting every candle. Up, no down. Up. No. Up. Thank you so much, brother. And whoever is watching this, more than enough for me. I don't give a fuck about like how many people are watching and all. I don't care. And I also recently started, so like it takes time to join, like, you know, people to get along and like join and this and that. Okay. We did not want it. We didn't want that. Okay. See this? बहुत जल्दी ऊपर चला गया था. Then last में it rejected. Going up very early, that is also very not a good thing. Okay. You see this? This is a wick. This is a wick. This is another wick. This is another wick, and so many wicks, right? So I always tell people, like, whenever you see a lot of wicks, right, that is the most horrible market condition that you can trade in. You're getting my point? That is the most horrible condition. But sometimes after that week also you find some setups, and then you go for it. So yeah, 7 seconds are there. We need the rejection above that area. Okay, it did break out actually. Okay, damn, you see this? Not good. Not looking good at all, but let's see. I'm in, dude. I'm in. I'm not out. I'm in for this. I already took this trade, so I cannot be out. I have to be in, because now I cannot change anything. I mean, like, I am in for this. The only thing is that we need some sort of breakout from this area at least. You're getting my point? Inner world. At least we need some sort of breakout from this area. Okay, this one.
and then we'll get more confident about the setup. You're getting my point? So when I entered, it was too early, but it was not wrong. The only thing is that there is a difference between these two things. एटलीस्ट हमें ये वाला लेवल जैसे ब्रेक होता है उसके बाद देन या सी केम बैक, सेम थिंग हैपेंड. उधर भी ब्रेकआउट हुआ था, मैनिपुलेट किया था, एंड देन वी वेंट अप, राइट? सेम थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो. इट इज़ नॉट completely up but still it is trying to go up, and let's see now. The only thing is that there are a lot of choppy candles, तो थोड़ा impatient हो जाता है in general इंसान, right? कोई भी normal इंसान होगा थोड़ा impatient तो होगा ही, but at the same time you need to follow the rules and then stick to it. That's it. People who are watching, like, subscribe, share, do whatever you can, and make this 1K as soon as possible. Nah, dude, nah. I'm so bored right now on this trade. I'm so bored. I mean, nobody's like, so boring, dude. What is this? What is this? Going up and down and up and down. Like, even though you know what's gonna happen, but like it takes so time to like execute that. Sometimes it's just frustrating, you know. 12 seconds, just go up, dude. Just go up. Just go up. I know you're trying to go up. Just fucking go up. Why so much drama? Hell no. Accumulation. Okay, we call it consolidation also. When market does something like that, that is consolidation. Oh shit, my max charging is very less. Just a second, guys. Hello. I hope you guys are able to see me in 2-3 seconds. Just a second. ठीक है. Cool. Okay, just a second. Chalo. I hope I'm audible. I hope everything is all right.
ठीक है, we're here. Everybody still, you guys should be here. You guys should be here. Okay, you guys have to witness this. I'm not gonna leave. Cool. You're holding. I'm holding gold cell. That's crazy, dude. That's crazy. We're in competition, huh? We're in competition. Let's go. Okay. Yeah. Not a good candle again. I would say that. Keep coming to that fucking support, dude. Keep coming to that support. Like how many times? How many times does it have to do that? Are we in profit overall? Okay, $4. That's crazy. $4 is crazy. Okay, we're back. We are back. Is everything looks nice? Okay, how is my camera looking? इसको fix कर देता हूँ मैं. Okay, cool. Everything is sorted now. Everything is perfect. People are holding on sell. We are holding on like this, that. Let's go. 140 seconds for this one. Okay. Let me just go back to this, and what is it doing? It is trying to take support again. 1 2 3 4, right? एक चीज़ ध्यान में रखना, 1 2 3 तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, राइट? एंड तीसरी बार के बाद से हमेशा क्या होता है तुमको पता है, हमेशा मार्केट वहाँ से ब्रेक करता है. ओके, सो दिस इज लाइक अ थर्ड टाइम दैट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दैट एरिया. एंड ऊपर देखना चाहोगे तुम, एक बारी दो बारी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, राइट? हो सकता है तुरंत तुमको ये वाला भी मूव देखने को मिल जाए. ठीक है, वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट की आकांक्षा बहुत ज़्यादा क्रेजी सी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू होल्ड फॉर दैट. एंड यप, नोप, ब्रेकआउट, yes, breakout 40 seconds, 47 seconds. अगर ब्रेकआउट भी हो रहा है देन वी नीड सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑफ दैट एरिया. वी नीड सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन ताकि हम उसको अच्छे से फिर होल्ड कर पाए. ठीक है, क्रेजी कैंडल, डैम. We're good. Nothing crazy actually. ठीक है, fuck everything, just focus on this. How many guys know Azuz? How many guys know Azuz? Okay, let's spill some tea. How many guys know Azuz? Any of you know Azuz? And what is happening with him? What is the controversy? Do you guys know all that? ठीक है, यहाँ से फोकस करते हैं. आई नो द कैंडल वॉज वेरी इंसेन, जहाँ पर एक तुमको देखने को मिलेगा, बट वही होता है व्हेन यू आर इन द मार्केट विल ट्राई टू मैनिपुलेट एंड लाइक take some sellers and this and that is where you need to like not panic and like get your shit together. You're getting my point?
So right now I'm chill. I'm chilling right now. There is no issue. I don't mind if it goes down. I don't mind if it goes up, right? But I would love if my setup is gonna work out in my favor, right? That is a whole sole purpose of taking any sort of trade. You're getting my point? And also there is a high probability that like if it's gonna come like there it has tapped in, dude. Wait, 15 minute, no, 30 minute. What is the FEG? FEG was on. Oh no, the FEG was invalidated, right? Because market did come down. So yeah, we cannot consider that right now. So this is a position. It's coming down. It's definitely gonna might take out the stop loss, and we might take the loss. That's completely fine. But right now, what we need to look at is the support is crazy, dude. The support is crazy. The support is crazy. Oh, now it's kind of tricky. Okay, you see that सपोर्ट लिया उस एरिया से, ठीक है. Third time it took support of that area. Okay, the only thing I'm expecting this a bounce, that's it, or else we're gone. Crazy, crazy, crazy. Okay, nice, nice. Nice rejection off of that area, and yep, still 1.5 minutes. I'm still in. You're still in? Crazy, bro. Crazy, crazy. You're still in. My boy is still in. Okay, I'm also still in. No worry. Okay, nice. Love that rejection. The only thing is that थोड़ा इसको इधर ले लेता हूँ. Good, you guys are able to see now. चलो, जो लोग यहाँ पर है सब्सक्राइब कर दो फटाफट. Then we'll be able to hit 1K very soon. May hit and reverse. Might be. The only thing is that I don't want it to just like fucking reverse off of that area, because that's very obvious area. I get it. I think दोनों liquidity हो जाएंगे. Yep, maybe. Both side liquidity hunt. 42 seconds will decide everything. 42 seconds will decide everything. Twelve seconds. थोड़ा ऊपर पुश चाहिए, then otherwise we are gone. Yes, exactly. That was the push I was talking about. ठीक है. Very close. Very close. ठीक है. What the hell? Nice, Vivek, nice.
So close, so freaking close. We're out, 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 we're out. You saw that? यहाँ से हो सकता है रिवर्स करेगा, but not really. But yeah, eventually it took out. It took the fucking stop loss. But this has happened after loss, and I think loss was not that much. How much was the loss? 178. Not that much. Not that much. Okay, not that much. So no stress. That was the trade, but it went against us, and that is completely fine. The stop loss was there, everything was there, and there is a high possibility that it's gonna reverse off of that area. It's gonna reverse off of there. Do you want me to make that money right now? Do you want me to make that money? You might call me a gambler, but like I don't care. Do you want me to make that money right now? Okay. Wow, wow. The slippage is crazy. The slippage is crazy. How much was the loss? 178, right? We waited for so long after just for that loss. No, dude, I would take more loss rather than that. Am I making a mistake right now? I don't think so. I'm just playing, guys. I'm just playing. Don't worry. The emotion is not gonna take off. Nothing is like that. Chill, chill. All good, all good. Okay? All good. I can take losses. That's not the issue, okay? But this was a very stupid loss. That's the only problem. Nothing else. Okay, for the loss, for everything, like the stream. If you guys are watching right now, subscribe to the channel. I need all the people who I want all the subscribers right now. Okay, I want people to subscribe to the channel. And yes, take me to 1K फटाफट ठीक है and yeah stream no more loss but like chill 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 haha haha you see that let's fucking go you see that good one how much was the loss by the way 178 right 178 right okay I might hold this one by the way not bad okay there is a good the only thing is that I need some sort of confirmation after this like that's the thing this is not how I trade okay this is not how I trade but just to show you all कि कितना वेट किया हमने उस लॉस के लिए like we can recover that easily like this or that so it doesn't really matter you know once you know the system it doesn't really matter it's trying to go up again sorry go down dude so much why did we do this
Yes, yes, I know, I know. I'm just playing with it at this point. Honestly, I'm telling you. A little pump and then dump. Okay. Wow, lil pump and then dump. Crazy. Crazy rhymes. Never do what I'm doing right now, okay? Never do what I'm doing right now. This is the thing that I'm telling you. Never do what I'm doing right now, okay? This is crazy as shit. I've made this account. I can grow this account. I have that confidence. That's why I'm doing what I'm doing right now. Do not do what I'm doing right now, okay? Never enter into a trade after you just done with one trade. Never do that. You're getting my point? Never fucking do that. You're getting my point? So yeah, that's it. I said it 3 times. I said it. So yeah. कभी भी नहीं करना है एंटर, ठीक है? Crazy dump. Yep, crazy dump. Two minutes. If this cross this line, we're out. One and a half minute, and I'm like exiting this. One minute. Chalo, last 1 minute. Also, so one of the most important thing that I want to tell you all, join the community where I share all my trades, right? Also, you can check out my Instagram that I've recently posted a reel saying, like telling all of you all that how we made this profit, like how I turned my $2,000 account into $12,000. Okay, this is not how we trade daily. So we trade like this, right? The only thing is that we do not take back-to-back trades. We wait for some good setup and then we go for it. Okay. I think 10 out of 7 trades I always win. So you can check that out. You can go in past streams and you can check that too. Okay. So yeah, this is how it is right now. 16 seconds and yeah, I'm out. Fuck it. I might hold this for later, but this is it for today's stream. Guys, come tomorrow. Join me. Okay. We do daily live streams, and if you want to see amazing live streams like this, come join and we'll make money together. And this is what we're doing here. Okay. What is it doing? It's crazy. Okay, no stress. Chalo, see you tomorrow. And afternoon mein I might come live tomorrow, so I will see you there. Okay, thank you so much. Have a good day. Shabba khair. Bye bye.